वेल Xiaomi क्लेम कर रहा है कि Redmi Note 10 सीरीज के जैसे ही ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देता है, एक्सीलेंट कैमराज, एक्सीलेंट रिफ्रेश रेट, एक्सीलेंट बैटरी लाइफ। बट क्या ये नोट की लेगेसी को होल्ड ऑन कर पाता है? आइए जानते हैं इस फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो में, एंड आई विल टेल यू द 4-5 थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट द फोन। Hello there, I'm Sumita Karir, and today we're going to do a first look video of the recently launched Xiaomi Redmi Note 11 Pro. So सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। It's got this very flat design language, जैसा कि आप देख सकते हैं। शार्प कॉर्नर्स हैं जो कि थोड़े से राउंडेड हैं। पीछे आपका ये क्वाड कैमरा सेटअप लगा हुआ है which is jutting out a bit as you can see. And then you have the usual Xiaomi design. यहाँ पे आपके volume rocker buttons हैं. This is of course your power button which also acts as a fingerprint sensor. Then you've got these two stereo speakers on bottom and top जो ठीक काम करते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे 3.5 mm jack का support भी मिलता है which is great because most phones these days have done away with the 3.5 mm jack to accommodate the USB-C पोर्ट जो इसमें अवेलेबल है नीचे की साइड। और यहाँ पे आपका है सिम कार्ड पोर्ट, अगेन स्पीकर्स एंड माइक राइट हियर। तो ये हो गया डिज़ाइन का। पीछे का जो बैक है which is non-glossy and this is exactly how I like it, and because it's a matte back तो इस पे फिंगरप्रिंट्स भी नहीं अट्रैक्ट होंगे which is one of the biggest things. So यहाँ पे आपका मिनिमलिस्टिक Xiaomi लोगो है। इन हैंड फील जो है वो काफ़ी अच्छी है। आई थिंक वन हैंड यूसेज भी ठीक रहेगा फॉर सम पीपल, मे बी नॉट फॉर मी एज मच। उसके अलावा इसके जो बेजल्स हैं, बेजल्स आर नॉट दैट थिक। Let's talk about display because display में आ रहा है एक बहुत ही exciting feature which is its 120 Hz refresh rate जो काफ़ी fluid है। चाहे आप multiple apps use करें, you switch from one app to another, चाहे आप गेम्स खेलें बहुत हाई रेजोल्यूशन की, तो वो दिक्कत नहीं करता है। एंड ऑल्सो इट्स एडजस्टेबल, सो फॉर नॉर्मल डे टू डे यूसेज अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करनी है, यू कैन यूज़ द 120 Hz refresh rate. और अगर आपको नहीं करना then you can bring it down to 60 Hz as well, which is a great option to have. So the screen is a massive 6.67 inches Full HD plus AMOLED display. It's bright. अभी जहाँ पे मैं बैठी हूँ there is a lot of outdoor lighting that's also coming in, but it's not really impacting the display even a bit. Everything is legible. You can of course turn on the night mode, day mode depending on what you feel like. It's also got a Gorilla Glass 5 protection. So this beast is powered by the MediaTek Helio G96 processor, which is good for day-to-day tasks but is not really meant for heavy-duty gaming and other very power-consuming apps. But otherwise day-to-day usage में, चाहे वो आप social media कर रहे हो यूज़ या browse कर रहे हो, email apps यूज़ कर रहे हो, chat apps यूज़ कर रहे हो, उसमें ये काफ़ी effective है। Switching between apps is not a problem. The battery doesn't drain very quickly, ये heat up नहीं होता है। However, like I said, gaming could be a bit restricted on this one. So other than that, this also has Android 11 and MIUI 13. Let's now talk about the battery. Well, the battery is a massive 5000 mAh, which basically will last you for more than a day. A day and a half में आपको चल जाएगा, depending on moderate usage. It's also got a 67 watt fast charging support. Full charge takes less than an hour and 75% of the phone gets charged in 30 minutes flat. और 0 to 50% हो जाता है आपका 15 मिनट में flat charge, which is faster than most other phones around. And now let's talk about the other breakthrough feature, the other main USP of this phone, which is of course the quad camera setup. Not just the quad camera setup, but इसका जो 108 megapixels का primary camera है, which is huge, which is immense. So यहाँ पे 4 cameras हैं, 108 like I said, then you have an 8 megapixels camera, another 2 megapixels camera, और एक आता है 2 megapixels का depth camera और एक 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा। तो जो इसकी पिक्चर्स मैंने लिए हैं, आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दीज पिक्चर्स। दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स दैट आई टुक। इनके जो कलर्स आए हैं वो बहुत ही विविड, बहुत ही शार्प आए हैं। Now as far as video recording is concerned, 4K option missing here and you can record videos at 1080p.
प्राइसिंग इन वेरिएंट्स पे आपको मिलेगा 6GB प्लस 128GB का वेरिएंट दैट स्टार्ट्स एट 17,999 एंड अनदर वेरिएंट जो है 8GB प्लस 128GB का विच इज़ 19,999। सो अंडर 20,000 में आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। नाउ गाइज, अगर आप इसे लास्ट ईयर के Redmi Note 10 Pro से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीमेंटल अपग्रेड है। बैटरी में, हालांकि बैटरी में और प्रोसेसर में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट अगेन गाइज दिस इज़ फॉर दोज ऑफ यू जो वैल्यू करते हैं स्पेक्स को, जो वैल्यू करते हैं फीचर्स को, जो वैल्यू करते हैं परफॉर्मेंस को एंड एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट को। तो ये उनके लिए है जो 5G से obsessed नहीं है and who are good to go with 4G as well, just like I am. Stay tuned to Gadget Times for everything on tech and of course all our reviews. Goodbye and thank you very much for watching.